तो कल हमने पाइल्स का अचूक फॉर्मूला समझा था। अभी हम पाइल्स के एक दो और भी अचूक फॉर्मूलों की बात करेंगे। So we were discussing the various different type of the treatment of piles. हम पाइल्स के अलग अलग ट्रीटमेंट समझ रहे हैं, राइट? वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट वेरियस ट्रीटमेंट ऑफ द पाइल्स और द हेमरॉइड। हमने कहा कि जिस व्यक्ति को पाइल्स की तकलीफ होती है उसको उल्टा लिटाइए और चेक करिए कहीं यहां पर ब्लू ग्रे कलर के स्पॉट तो नहीं। If you find the blue gray color spot, you have to sedate. How to sedate? You have to sedate in the sujok, or you can bloodlate in the local area. आप उसे सुजोग में भी सेडेट कर सकते हो और यहां पर आप लोकल एरिया में भी सेडेट कर सकते हो। दिस इज ट्रीटमेंट नंबर 1, that you have to observe the lumbosacral region, find out the gray brown spot and sedate. This is treatment number 1. फिर हमने ट्रीटमेंट नंबर 2 बताया था। We have discussed the treatment number 2. 31, 32, 33, 34. All the 4 points. Tonify with the governing vessel 1. This is treatment number 2. हमने कहा कि अगर किसी को पाइल्स होता है तो चारों पॉइंट को टोनिफाई कर दीजिए। All the 4 points should be tonified. चारों पॉइंट को आप टोनिफाई कर दोगे तो भी पाइल्स में फायदा मिलेगा। मींस गवर यूरिनरी ब्लैडर 31, 32, 33, 34। ये था ट्रीटमेंट नंबर 2। एक बार 34 की लोकेशन देख लेते हैं। 34 मींस located over the fourth posterior sacral foramen, perpendicular insertion 0.5 to 1 cm or 1.5 to 34 means this point. 30. Right? तो इसी लाइन में बाकी के पॉइंट है हमारे 31 से लेके 34 तक। So till the buttock crease we have all the points 1, 2, 3 and 4. 1, 2, 3 and 4. Bladder 31, 32, 33 and 34. 4 बिंदु है। और governing vessel 1. Total 5 points. This is the treatment number 2. The treatment number 1, find out the gray brown spots and do the sedation. Treatment number 2, governing vessel 1 plus bladder 31, 32, 33, 34 tonification. Or even method, if you are not knowing what to do, then even method. तो even method कर सकते हैं। Now, the treatment number 3, what we have discussed. Treatment number 3 क्या है? Going to the thoracic 7, thoracic 7 की लोकेशन पर जाते हैं। So this is the point 1 chun left from the thoracic 7, T7. If we go 1 chun right and 1 chun left and do the moxibustion to this point, अगर हम thoracic 7 की लोकेशन से 2 चुन बाहर चले जाते हैं तो ब्लैडर 17 मिलता है। और ब्लैडर 17 is the influential point of bladder or the bleeding or all type of the blood disharmony. But this point is 1.5 chun. हम 1.5 chun नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ 1 chun जा रहे हैं। From the central line, from the bladder, from the
thoracic 7 we are going one chun lateral, हम एक chun lateral जा रहे हैं. ये हमारा था तीसरा point, third point. So the point number 1 this, point number 2 this, and 3 will be one chun bilateral from thoracic 7 moxa. हमने moxa कर दिया. चलिए, okay. Next. So point number 1, find out gray or brown spot over buttock area, hip area, lower back area, and sedate them. We can do dragon needling technique. What is dragon needling technique? So suppose we are finding one spot here. We are finding one spot here and one spot here. So suppose this is the spot, we can needle from all around. Either we can needle pointing center or pointing outward. What in this case we are needling pointing center, right? This is called dragon needling. इसे ड्रैगन निडलिंग टेक्निक कहते हैं. ये कॉस्मेटिक में भी बड़ी फेमस है. अभी हमने बैंगलोर में कॉस्मेटिक की क्लास में ड्रैगन निडलिंग बताई थी. तो यहां पर लंप हुआ और ड्रैगन निडलिंग की तो लंप पिघल गया. So dragon needling means you are needling from all around, targeting the area, pointed area. उस एरिया को टारगेट कर रहे हैं आप. और फिर तो ये हमारे स्पॉट का ट्रीटमेंट हो जाएगा. द वी आर फाइंडिंग द ब्लू एंड ब्लैक white spot and this is the treatment. Number 2, I told you governing vessel 1, urinary bladder 31, 32, 33, 34 tonification. ये हम समझ चुके हैं कि जहां से बटक की क्रीज स्टार्ट होती है, द बटक क्रीज स्टार्टिंग फ्रॉम, at that location we can find out 4 points. Bladder 31, 32, 33 and 34, right? Then the technique number 3, one doing the moxibustion on the point at the level of T7, one chun bilateral, एक chun bilateral, one chun bilateral, right? ये हमारा ट्रीटमेंट नंबर 3 हो गया. Then the previous class I discussed with you Achuk formula. Achuk means very wonderful formula. Very wonderful formula for hemorrhoid or the piles. I told you take the few points on the urinary bladder channel, like 1 point on the gluteal crease
UB 36. 1 point over the knee, UB 40. Then we are going down, UB 56 and 58. So 4 point we have to take on the UB channel, then CB1 and spleen 5. And one more point we have to take UB2. ये हमारा बहुत ही शानदार फॉर्मूला भी कैन सी है, UB 36 on the gluteal crease, UB 40, right? Then 56, then 58 on the side. So 56, even we can add 40, 55, 56, 57, 58, all the point, because in the different protocol, you will see. What I want to tell you, you can add all these points. You can add 40, you can add 55, you can add 50, like you can add all the points, whatever the number, all the 4 points. चारों पॉइंट को ऐड कर दिए, UB2 को ऐड कर दिए, UB2 तो हम जानते ही हैं. UB2 कहाँ होता है? UB2 is this point. It's a very good point for piles. Plus CB1 and spleen 5. ये हमारा अचूक फॉर्मूला. I will suggest you can start. The most wonderful point, the point of gluteal crease. This is the point of gluteal crease. And this is the point of knee crease. Then 2 point down, right? And this point on the mid eyebrow. ये हमारा पाइल्स का अचूक फॉर्मूला है, अचूक फॉर्मूला कहा गया है. Now the single point for chronic piles, single point. That is CB6, because piles are the result of spleen, chi deficiency or sinking. CB6 is a very good point. We can do the moxibustion. We can lift the chi, raise the chi. CB6 एक बहुत शानदार पॉइंट. आप CB6 पर लाल रंग लगा दो. CB6. We know where is the location of CB6. This is the navel. We are going 1.5 tone down. That is the location of CB6. इस पर लाल रंग लगा के छोड़. Red color. Red color is the color of moxibustion. तो भी पाइल्स में फायदा मिलेगा. आप CB4 पर भी लाल रंग लगा सकते हो. CB4, CB6. Look at here in this image. From the navel, if we are going 1.5 tone down and putting the red color on the CB6, आपने CB6 पर लाल रंग लगा दिया. Got it? अभी हमने ये बात की सिंगल पॉइंट. द सिंगल पॉइंट फॉर क्रॉनिक पाइल्स, इट्स नॉट फॉर द एक्यूट. एक्यूट में बात ही अलग हो जाएगी. एक्यूट का मतलब तो है अभी अभी हुआ है, हीट ज्यादा होगी, हीट ज्यादा हो सकती है. हम क्रॉनिक की बात कर रहे हैं. क्रॉनिक तो थका हारा, टायर्ड, लेजी, लिथार्जी, पुअर एनर्जी, डेफिशिएंट एनर्जी. In that condition, we can use the CB6. Now CB6 will be working very nicely, right? One person is having chronic, one person is suffering with the chronic piles, with a severe pain. What is the T? Chronic piles, and suddenly start getting severe pain.
एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो पाइल्स बहुत समय से है, कल खाने पीने में गड़बड़ हो गई, अब क्या करें? नो प्रॉब्लम. CV6 is for chronic piles and urinary bladder 58 for pain. ये 2 पॉइंट लगा दीजिए. Urinary bladder 58 is the Leo connecting point of UB. हमारे यूरिनरी ब्लैडर का लियो कनेक्टिंग पॉइंट है. यू कैन पुट दिस पॉइंट. ABC is the location of this point. अगर हम इस पॉइंट की लोकेशन की बात करें, from the ankle joint if we go 7 chun up, this is the location of UB58. अगर एंकल जॉइंट से हम 7 चुन ऊपर जाते हैं तो हमें यूरिनरी ब्लैडर 58 की लोकेशन मिल जाती है. दिस पॉइंट इज लोकेटेड 7 चुन अप from the ankle joint. So generally when we are measuring the UV channel, जब भी हम UV channel को नापते हैं, UV channel is coming from the central line like this, but here it's taking the turn. On the turn this point is 7 chun up, which is UB58. यही तो पॉइंट है जो पाइल्स के दर्द को मिटाता है. हमने क्या किया, एक लेडी को दर्द हो रहा था, हमने यहाँ पर 2 ड्रॉप ऑयल के डालकर थोड़ा मसाज करवा दी 2 मिनट तक, पूरा पेन ठीक हो गया. आसान है ना, कर सकते हैं ना, वेरी इफेक्टिव. यू कैन डू द मसाज फॉर 2 to 5 minutes. और one day what happened, one person was having too much pain, I give the tennis ball. Okay, so keep on pressing the tennis ball, then do every day in your home. When you are doing the treatment of the UB58, it will open the UB channel as well as the kidney channel, because urinary bladder 58 is connected to the kidney channel. Why? क्यों दोनों जुड़ा है? UB58 किडनी से तो जुड़ा ही है, क्योंकि लियो कनेक्टिंग पॉइंट है. हाँ, यस, पेन होता है हार्ड स्टूल के कारण, तो UB58 उसे सॉफ्ट कर दे. क्योंकि क्या है, व्हाट इज द हार्ड स्टूल? देयर इज excessive, because kidney, what is kidney? Kidney means who control opening and closing of the anal sphincter. And there is any problem there which is affecting the anal area, we can use kidney. So, and if kidney is suffering, we can use UB58. हमने पहले समझा हुआ कि कोई भी मेरिडियन बहुत सफर कर रहा हो तो क्या करना है, कौन सा पॉइंट लेना है? कोई भी मेरिडियन सफर कर रहा है तो कौन सा पॉइंट लेना है? उसके कपल का लियो पॉइंट. वंडरफुल. कोई भी मेरिडियन सफर कर रहा है, हार्ट सफर कर रहा है, एसआई का लियो पॉइंट. लिवर सफर कर रहा है, गॉल ब्लैडर का लियो पॉइंट. आंखों में दर्द, लिवर, तो गॉल ब्लैडर का लियो पॉइंट. If any meridian is suffering, take the Leo point of couple meridian. Right? Kidney is suffering because the piles exactly in the central, lower central part, that area is having energy of kidney. UV58. वैसे जनरली क्या होता है कि पाइल्स का दर्द हो, और इट्स नॉट ओनली अबाउट द पाइल्स, आई एम टेलिंग ऑल द 3 holes, whether the urinary path, anal path, or the genital path. If there is any unwanted emergencies or the pain, one lady came with a severe menstrual pain, dysmenorrhea. एक फीमेल को डिस्मेनोरिया की तकलीफ, पीरियड के ठीक पहले बहुत दर्द करता है, राइट? किडनी, we just treated the loose oxy point of kidney, Leo point of kidney, source point of kidney, G clef point of kidney, because kidney is the controller. Whether you want to treat urinary problem, kidney.
Genital problem, kidney. Problem connect with the stool, kidney. If you are treating the kidney, then let's take the couple also, UV channel. Couple भी ले लो, right? काफ मसल की मसाज करने मात्र से पेट की गैस निकल जाती है, रिलीज हो जाती है। आपने देखा है कि पहले वो जमाने में लोग अपने माँ बाप की पैर दबाते थे तो उनका पाचन कमजोर हो जाता था, तो उनकी गैस वैस निकल जाती थी, पेट अच्छा हो जाता। तो आजकल तो मशीनें आ गई, बस आप उसमें पैर रख के बैठ जाओ, वो भी दबा देती है। What I want to tell you, the calf muscle play very important role, very very important. Calf muscle, it's having UV channel which is connected with the rectum, piles. तो चले, हमने अभी एक फॉर्मूला देखा था, अभी अचूक फॉर्मूला UB36, UB40, देन मल्टीपल पॉइंट द UV चैनल। आपको ग्लूटियल क्रीज से लेकर काफ मसल के मिड पार्ट तक यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन के मल्टीपल पॉइंट लगा देना है और स्प्लीन 5 और CV1 ऐड कर देना है। आप देखोगे पाइल्स में ये अचूक बाण की तरह काम करे। आई विल रिपीट, फॉरगेट द पॉइंट, just what you do. When the patient is complaining you, can you treat my problem, the piles? What do you do? Okay, tell the patient lie down. और एक हाथ में बेलन ले लो, बेलन से थोड़ा सा यूवी मेरिडियन की मसाज कर। You can start massage from the bladder 36 and keep on doing the massage till the bladder 40. Remember, on the back side of the knee, we have to do the gentle massage. Keep on doing massage bladder 56, bladder 58 till the bladder 57, 58. यहां तक आप मसाज कर दो, उंगलियों से मसाज कर दो, ग्वासा से कर दो, right? After that, you can put the needle here or you can put the magnet in the fingers. Cover these all points, bladder 36, bladder 40, 40, 55, 56, 57, 58. CV1, spleen 5. इतना करने मात्र से आपने ट्रीटमेंट खत्म किया, उसका दर्द तभी तक खत्म कम हो जाएगा। Pain will disappear immediately, and with a longer treatment, person will be feeling good. Do not forget to give the nutrition plan. न्यूट्रिशन प्लान देना मत भूलिएगा, उसके बिना कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ठीक करना कठिन है। खाने पीने का प्लान जरूर दीजिएगा, राइट? सो इन दिस वे now I would like to discuss with you one formula. I will repeat once again, अचूक फॉर्मूला, ये तो अचूक है। urinary bladder 38, the point of gluteal crease. Urinary bladder 40, the point of knee crease. Then the point down 56, 58 and urinary bladder 2, CV1 spleen 5. ये अचूक फॉर्मूला कहलाता है। मैं जरूर इसमें जोड़ना चाहूंगा spleen 4 and pericardium 6. I always want to add this because spleen 4 is the master point and pericardium 6 is the couple point. Spleen 4 will be on the left side for male and the right side for female. ये हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी pericardium 6 will be opposite side wherever the spleen 4. इसके साथ ये ऐड कर, और मास्टर टंग के जो हमने कल पॉइंट समझे थे 33.01, 33.02, 33.03 ऐड कर दीजिए। So 3 master tongue point yesterday I told you on the yin yang junction here. Neither in the lungs meridian nor the large intestine meridian, but at the union. यहां पर 3 पॉइंट ऐड, टू चुन टू चुन टू चुन in any direction.
अब आपका अचूक से भी बड़ा अचूक फॉर्मूला तैयार हो गया। हमने अचूक में और ज्यादा मसाला मिलाकर और अचूक बना दिया उसको। समझ ले मेरी बात। और अचूक बनाना, इससे भी ज्यादा अचूक बनाना है। आपको लगा कि अब तो बस चैलेंज, अभी मैं तुम्हारा दर्द वर्द सब ठीक करूंगा। पूरा ठीक होगा जब पेशेंट डाइट कंट्रोल करेगा, नहीं तो पेशेंट बोलेगा ठीक करके देखो, हम भी देखते हैं तुम कैसे ठीक करते। रोज सुबह शाम समोसे खाए, भजिया खाए, मिर्ची की तली तली पकौड़ियां खाए, कोई ठीक नहीं कर पाएगा उसको। Patient need to control the diet, okay, because this is the problem of the large intestine. Am I right? ठीक कर पाओगे अगर वो रोज समोसा भजिया फरसान, taking the unwanted food, it's difficult to eat. Nutrition plan is the need, okay. लेकिन आपने अगर ईयर अपेक्स ब्लीड कर दिया, ईयर अपेक्स, या आपने यूरिनरी ब्लैडर 40 घुटने वाला पॉइंट ब्लीड कर दिया, तो थोड़ा तीव्र गति से दर्द निकल जाएगा, तीव्र गति से, राइट। लेकिन अगर नहीं करना तो भी चलेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ब्लीड करने का। We do bloodletting when there is a very acute condition, like person is having too much pain, otherwise not needed. Just put the point, and even not put the needle and magnet, you just do the massage on this point, it will give instant results. जब मैं ट्रीटमेंट देता हूँ ना पेशेंट को, तो पहले मैं एक पॉइंट दबाता हूँ उसका, ये वाला, ये वाला। रिफ्लेक्सोलॉजी में इतना शानदार पॉइंट है, इसको दबाते ही दर्द खत्म हो जाता है। फिर ट्रीटमेंट का फर्स्ट भी, as soon as we press it, pain will disappear immediately. Then do the other treatment for piles. Yeah, for piles. Immediately pain will disappear. Or you can do the gentle massage like this on this for the piles. Right? Actually, we are telling it PP, P and P. P, P. Prostate piles. This is the prostate, this is the piles. Got it? Double P. तो जो मेल के लिए प्रोस्टेट है, फीमेल के लिए यूट्रस हो गया, है ना। वही पॉइंट, फीमेल के लिए यूट्रस हो जाएगा। You can give wonderful. Let's see the another अचूक फॉर्मूला। अचूक फॉर्मूले कई सारे दिए हैं हमारे एक्यूपंक्चर में, कई सारे फॉर्मूले का वर्णन है। So I would like to discuss with you one protocol which is very good for chronic piles. Chronic, actually when the patient is coming, definitely most of the patients are chronic on. Initially they are not going anywhere, or initially they might go to the allopathic medications, right? And doctor might advise them surgery, and even sometimes they are doing 1 or 2 surgery, then they are coming. तो क्रॉनिक पाइल्स का या क्रॉनिक हेमरॉइड का क्या इलाज होगा? Whenever you want to treat the hemorrhoid, remember one thing: urinary bladder meridian play very important. यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी प्रकार के पाइल्स को ठीक करने के लिए। So we can tell not only chronic piles, but I will tell you this formula. This formula will be applicable for all type of piles which we are discussing. All type of piles. All type of piles का क्या मतलब है? There are many divisions, subdivisions of the piles. There are many grade of the piles. Grade 1, grade 2, grade 3, grade 4.
There are many different types of the piles: masculine piles, feminine piles. Okay. So we are discussing the formula which is applicable for all type of piles. Okay. तो सबसे पहले हमने पेशेंट को लिटा दिया, भैया लेट जाओ. First we will be doing the gentle massage and acupressure on hand reflexology part, which I told you. सबसे पहले हमने पेशेंट का ये वाला पॉइंट दबा दिया, 2 मिनट इसमें लगा दिया. 2 मिनट लगाएंगे लेकिन पेशेंट के दिल में शांति आ जाएगी क्योंकि पॉइंट बहुत इफेक्टिव है. So this is the point. I told you already, point is here. That is the point of piles. Number 1. Number 2. फिर हमने क्या किया, अब हमने पेशेंट को लिटाया उल्टा. Now there's a turn of the urinary bladder channel, but because this is the different formula, but we have discussed from. So from the UV40, from the UV40 till the 58, this is the very useful area. From the 40 till the 58, we are massaging this area. We can use any acupressure equipment. हम किसी भी acupressure equipment का प्रयोग कर सकते हैं. हम अपने उंगलियों का प्रयोग कर सकते हैं, हम बेलन का प्रयोग कर सकते हैं. We have to massage this area for few minutes, maybe 2 minutes. Then we can put the needle on the 40, 55, 56, 57, 58. Or we can put the needle on any 2 to 3 points. और यह पूरे पॉइंट कवर करती है. So the step number 1, we are doing the treatment on the UV channel. Starting from the knee till the mid of the calf, हमने घुटने से स्टार्ट किया और मिड ऑफ द काफ तक चले गए. स्टेप नंबर 2. Step number 2 is, now we are coming to the gallbladder channel. अब हम gallbladder channel की बात करते हैं. We are taking the gallbladder channel because sometimes piles might be bleeding. Okay, sometimes piles might be having tendency to bleed in the future. There might be more heat. अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने gallbladder channel लिया. So we are taking 2 points, gallbladder 38, which is the fire point of the gallbladder, and gallbladder 43, which is the water point of the gallbladder. हमने 2 पॉइंट ले लिए. So we know that is the gallbladder 44, gallbladder 43, it is the water point. Then gallbladder 41, gallbladder 38 is the fire point. Then gallbladder 34 is the earth point. हमने क्या किया, 2 ले लिए, fire and water. We want to arrest the fire, we want to improve the water, we want to cool down the gallbladder. Because when there is a bleeding, the chances to involve the wood element is aggressive, might cause bleeding. Liver जब aggressive हो जाता है तो bleeding कर देता है. So whenever liver is aggressive, we sedate the liver 3. Liver is attacking anywhere. If you remember, I have discussed with you earlier कि liver जहां भी आक्रमण करता है वहां पर bleeding पैदा कर देगा. If liver is attacking on the lungs, bleeding will be in the cuff. Liver is attacking on the stomach, bleeding will be with the vomiting material. जहां भी लिवर का आक्रमण होगा उसमें एग्रेसिवनेस आ जाएगी, तहसनेस हो जाएगा वो एरिया और ब्लीडिंग हो जाएगी. लंग्स में अगर लिवर ने आक्रमण कर दिया, लिवर ने आक्रमण किया कहाँ, लंग्स पर, तो कफ में ब्लड आ सकता है.
पेट पर किया तो वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है। लिवर इज अटैकिंग ऑन द नोज, नोज ब्लीडिंग। लिवर इज अटैकिंग ऑन द आईज, रप्चर आई, ब्लीडिंग फ्रॉम द आईज। लिवर अटैकिंग ऑन द ब्रेन, internal hemorrhage, which is common in the stroke. Liver is attacking on the uterus, uterine bleeding. So liver is, so we always arrest the liver by the liver 3. हम liver 3 से arrest करते हैं। तो अब पाइल्स तो ब्लीडिंग पाइल्स भी हो सकता है। अब हम जब दावा कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला सभी प्रकार के पाइल्स पे काम करेगा, तो हो सकता है ब्लीडिंग भी हो, तो हम लिवर 3 भी लगाएंगे, हम गॉल ब्लैडर 38 और 43 भी लगाएंगे। तो हम इस बात से बेफिक्र हो जाएंगे कि भाई अब अगर ब्लीडिंग होने की कुछ संभावना हो तो फ्री ना वी आर फ्री, बिकॉज gallbladder 43 इज वंडरफुल पॉइंट। gallbladder 43 is called stop bleeding point. I will show you here. gallbladder 43 को हम stop bleeding point कहते हैं। ये रहा, look at this image. ये गर्मी को शांत करता है। So this is the location of gallbladder 43. It's a wonderful point to stop the bleeding from anywhere because of any reason. It's not only because of the piles. ऐसा कुछ भी नहीं कि केवल पाइल्स की ब्लीडिंग, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग को यह अरेस्ट करने की ताकत रखता है gallbladder 43। इवन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो कहते हैं कि कब नहीं लगाओ, ये बॉडी को क्या करेगा, ये बॉडी को ठंडा करेगा। दिस विल ब्रिंग द कूलिंग इफेक्ट। ओनली वन कॉन्ट्राइंडिकेशन, पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग कफ, कोल्ड। अगर आपको बस सर्दी है तो कहते हैं ना कि भाई सर्दी है तो फ्रिज का पानी मत पियो, है ना, बर्फ मत डालो पानी में, लस्सी मत पियो। In the same way, if you are already having too much coldness and cough in the body, then don't use it, gallbladder 43, because this is the point, will cool down. ये पॉइंट क्या करेगा, कूल डाउन करेगा। ग्वासा इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं, यस करते हैं, आप ग्वासा का प्रयोग करिए, ग्वासा इज वेरी इफेक्टिव। तो हमने क्या किया, हमने यूरिनरी ब्लैडर के कई सारे पॉइंट ले डाले। We have taken the point of the UV channel. UV channel from knee to mid calf, घुटने से लेके काफ मसल के आधे तक। नाम लिख देता हूं, UV 40 है, 55, 56, 57, 58, जो भी नाम है, नाम में कुछ नहीं रखा, और इनके बीच में लगा दिए तो भी चलता। आपने कहा यार पता नहीं 55 लगा कि नहीं लगा, कहीं गलती से ऊपर नीचे तो नहीं लग गया, तो भी चलेगा। डू नॉट मिस द लाइन। इफ यू मिस द पॉइंट इट्स ओके, पर प्लीज डू नॉट मिस द लाइन। आपने कहा यार चलो 55 लग गया, 56 लग गया, पता नहीं यही लगा कि लगा, कोई बीच में तो नहीं लग गया, नो प्रॉब्लम। इवन यू विल गेट द रिजल्ट बिकॉज energy is flowing in the meridian. If you are missing the point, still we will get the result. Just don't miss the line को miss मत करिएगा। Then we have taken the point on the gallbladder channel, gallbladder and liver channel. In the gallbladder channel we have taken 2 points, gallbladder 38 and gallbladder 43, and on the liver channel we have taken liver 3, right? We have taken this, okay? So in this way we'll proceed now. अब हम आपको एक चीज बताएं, we will tonify the kidney. Let's strengthen the kidney. Strengthen the kidney and lift the chi. अब इतना ही करना बाकी है, किडनी को स्ट्रेंथन कर दो किडनी 7 से, और ची को लिफ्ट कर दो CV1 CV6 से, एंड गवर्निंग वेसल 1 एंड गवर्निंग वेसल 20। डन, ओवर। इतना किया, इसे कहते हैं किसी भी तरह का पाइल्स हो उसका ये इलाज हो गया।
The treatment of all type of piles is here. You can see all the points written here. Only we have taken the point of gallbladder, liver, UV. Then we have lifted the chi, raised the chi. So this is the treatment formula, working very nicely for all type of piles. सभी प्रकार के पाइल्स पर काम करेगा. सभी प्रकार के पाइल्स का मतलब समझिए. कुछ पाइल्स कहलाते मस्कुलाइन पाइल्स, राइट, जैसे कि फिस्टुला बनने की तैयारी हो रही है, उस पर काम करेगा, राइट. नंबर 1 मस्कुलाइन पाइल्स. Musculine piles means there might be preparation of fistula formation. फिस्टुला का मतलब क्या होता है कि ये एनस है, पाइल्स कहीं हुआ तो वहां से ट्रैक बन रहा है, ट्रैक रास्ता बन रहा है और यहां खुल रहा है, तो पस भी है और ब्लड भी है. तो ये हो सकता है मस्कुलाइन पाइल्स. इट माइट बी फिस्टुला इन द फ्यूचर. सेकंड इज फेमिनाइन पाइल्स. एक सिंपल सा फेमिनाइन पाइल्स है. ये सब नाम है. कुल मिला के हम ये कहना चाहते हैं किसी भी तरह का पाइल्स होगा ये फॉर्मूला काम करेगा. आपको बस नाम बता रहे हैं. Just it's just the piles around the anus. It's not having connection with the tract. It's not having connection with the fistula. It's not having connection with the pus formation. ये सिर्फ feminine piles है. Sometimes piles, in the piles we can see very hard nodule formation. It is on the anus. The hard core nodule is formed. एकदम हार्ड कोर नोड्यूल हो जाता है, स्वॉलन नोड्यूल, स्वॉलन. ये भी एक तरह का पाइल्स है जिसे इंटेस्टाइनल पाइल्स कहते हैं. इस पर भी काम करेगा. फॉर्मूला वही, द फॉर्मूला विल बी सेम. कोई भी तकलीफ हो, किसी भी तरह का पाइल्स हो. एंड वी नो एनल फिशर. एनल फिशर भी होता है. एनल फिशर में क्या होता है, बस स्क्रेचेस पड़ जाते हैं अराउंड द एनस. जैसे किसी की एड़ियां फट जाती हैं, कैसे क्रैक हो जाते हैं एड़ियां, like many persons suffering with a heel crack. The same crack we see around the anus, that is called anal fissure. इस पर भी काम करेगा वही फॉर्म, the same formula. And the fifth is bloody piles. Too much bleeding is happening. So these are the 5 type of the piles. ये कहलाते हैं masculine, feminine, hard, fissure and bloody. So these are called 5 type of piles. Formula will be same, एक ही formula सबका. The first we have taken the point of the UV channel, UV 40, 55, 56, 57, 58. Then GB, GB 38, 43, and liver 3. Then we have taken kidney 7, raise the cheese CV1, CV6, governing vessel 1, governing vessel 20. Excellent formula. Done. इतना ही सा तो करना है भाई. और चाहो तो रिफ्लेक्सोलॉजी का पॉइंट जोड़ दो, और चाहो तो स्प्लीन फॉर पेरिकार्डियम 6 भी जोड़ दो. That's your personal wish to make the formula more strong. But this formula itself is a very strong formula. इतना भी बड़ा strong है. Got it?
There is a one problem in the piles, very common problem. एक प्रॉब्लम होती है पाइल्स वालों को, क्या होती है, उनका रेक्टम प्रोलैप्स हो जाता है, रेक्टम बाहर निकलता है. रेक्टम इज स्पेशली कमिंग आउट फॉर द पर्सन if they are using too much medicine to clear the stool. अगर कोई व्यक्ति ज्यादा दवाइयां खाता है, कोई व्यक्ति पेट साफ करने की बहुत सारी दवाइयों का सेवन करता है, तो आंतें कमजोर हो जाती हैं और संभावना रहती है कि उसे प्रोलैप्स ऑफ एनस हो जाएगा, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम हो जाएगा. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, राइट? देन व्हाट वी डू? Okay, let's see what we do for the person suffering with the prolapse of rectum. We can add one or two points. That's it. अगर किसी व्यक्ति को प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, इतनी कमजोरी आ गई है कि रेक्टम बाहर निकला जा रहा है, what is the treatment? Lift the rectum. Or we can tell, raise the chi up. ऊर्जा को ऊपर उठाना पड़ेगा. ऊर्जा कैसे उठेगी ऊपर? अभी हमने आपको बताया. ऊर्जा उठाता कौन है? Who will lift the chi up? Why the rectum is prolapsing? Rectum आखिरकार प्रोलैप्स क्यों? There might be, because kidney is very much important, playing an important role to and to control all three lower holes. हमारे नीचे के तीनों होल्स को किडनी कंट्रोल करती है. मे बी किडनी वीक हो रही, किडनी, the holding capacity of kidney is becoming weaker. Definitely there might be spleen deficiencies, many more things. I'm directly coming to the point. If there is a prolapse of rectum, you need to raise the chi. How to raise the chi? ऊर्जा को लिफ्ट कैसे करें? अभी हमने समझा था, किडनी का मदर पॉइंट लगा सबसे पहले. We know the kidney 1, kidney 2, kidney 3, kidney 7 and kidney 10. Kidney is the water and kidney 7 is the mother point of kidney. अब किडनी कमजोर हो रही है तो इसकी मदर पॉइंट को टॉनिफाई करिए. तो द फर्स्ट पॉइंट विल बी किडनी 7 टॉनिफिकेशन. If your kidney is stronger, you are having good control on the urine, you are having good control on the stool, you are having good control on the semen, you are having good control on all the secretion coming out from the lower holes. If kidney is strong, अगर आपका किडनी स्ट्रांग है तो आप होल्ड कर सकते हैं, फिर प्रोलैप्स होने की संभावना घट जाएंगी. सेकंड, raise the chi. How to raise the chi up? How the raise chi up? So governing vessel 1 and the governing vessel 20, a wonderful point. We do moxivation on governing vessel 20. अब हमने 2 पॉइंट की बात की, हमने 2 पॉइंट लिए. एक तो हमारा होगा गवर्निंग वेसल 20. गवर्निंग वेसल 20 पर हम मोक्सा करेंगे. ये हमारा टॉप ऑफ द हेड का पॉइंट है. वी कैन सी द गवर्निंग वेसल 20 इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द यांग. हमारे शरीर में जितने भी यांग होते हैं, इन सभी का मीटिंग पॉइंट है ये. इसको मोक्सा करके लिफ्ट कर दो. Do the moxivation, lift it, or you do the tonification. But if there is a prolapse, then do the moxivation, because moxivation is very fast. हम हेयर लाइन से अगर नापें तो हेयर लाइन से भी नाप सकते हैं. हमारी हेयर लाइन से, आगे की हेयर लाइन से 5 चुन पीछे होता है. This point located 5 chun.
posterior from the anterior hairline. हमारी okay, these are different measurement methods. Ultimately, we have to reach till the DU20, right? कुल मिलाकर हमें पहुंचना कहाँ है? हमें पहुंचना है DU20. So now this is the wonderful way to detect the DU20. We can see the ear. हम कान को देखें से, देखो कान को गहराई से देखिए. कान is deviated, थोड़ा सा पीछे की तरफ deviated है. The ear is deviating toward the backside little. In the same line, we can draw one line, continue this line till the top of the head. This is the DU20. कभी कभी हम क्या करते हैं, कान को ऐसे नाप के ऐसे DU20 बना देते हैं, वो गलत है. Or from the anterior hairline, we can go 5 chin back. That is the DU20, right? So we need to do moxibustion here. हमें यहाँ पर मोक्सा करना होगा. As soon as we do the moxibustion, it will lift the chi up and will prevent the rectal prolapse. हमारे रेक्टम का प्रोलैप्स ये रोक देगा. और दूसरा गवर्निंग वेसल 1. अब गवर्निंग वेसल 1 तो एकदम हमारी स्पाइन की स्टार्टिंग में होता है. द पॉइंट गवर्निंग वेसल 1 और DU1 is located exactly in the, this is the governing vessel, we can see here. So here, tailbone, the starting point of the tailbone, that is the governing vessel 1 or DU1, जहां से हमारी स्पाइन का स्टार्ट होता है. Let's see this. So this is the governing vessel. We can see it. Exactly इसके आगे हमारा एनस है. ओके, इसी के आगे एनस. So you can stimulate in the sujuk, or you can stimulate in the body as per your comfort, as per the comfort of patient. So this is the governing vessel 1 and the governing vessel 20. We can do the moxibustion in governing vessel 20. तो हमें लिफ्ट ची को लिफ्ट करना है. हमने पहला पॉइंट किडनी 7 लिया, हमने 2 पॉइंट ये ले लिए. Now we'll take the CV1 and CV6. CV1, CV6. CV6 is well-known point. We are already aware with the CV6. CV6 is the point 1.5 to down. हमारी नाभि से 1.5 to नीचे होता है CV6, right? So we can see the location of CV6 here in this image. From the navel, we are going 2 finger down or the 1.5 to down. This is the location of CV6. We can put the red color here. यहाँ पर हम लाल रंग लगा सकते हैं, निडल लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं. We already know the distance between navel to pubic bone is 5 chin, and this is the 1.5 chin. CV6 is the very good point, the place who raise the chi up, और इसे हम विटामिन पॉइंट भी कहते हैं. अगर आप इस पर निडल लगाते हो या स्टिमुलेट करते हो तो विटामिन बढ़ते हैं. Then the CV1 is the point जिसे मूलाधार चक्रा भी कहते हैं. So CV1 is the point between the genital part and the anal part. This is the location of CV1. ये बहुत शानदार पॉइंट है. अगर हम प्रतिदिन ध्यान साधना के समय भी एडी यहाँ पर रखकर सिद्धासन में बैठकर अगर हम थोड़ी देर बैठते हैं तो भी ये पॉइंट का स्टिमुलेशन होता है. दिस पॉइंट इज ऑल्सो गेटिंग स्टिमुलेटेड इन द सिद्धासना. दिस पॉइंट इज लोकेटेड इन द पेरिनियम, so we can lift. So finally I will tell you how to lift the chi up, how to lift chi up, how to treat prolapse of rectum. रेक्टम के प्रोलैप्स को कैसे ठीक किया जाए. So now kidney 7, governing vessel 1,
and governing buzzer 20, especially this point is for moxibustion. CB1 and CB6 plus one more point I will tell you, that is RY. चलिए RY की बात करते हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको लगाना होगा, ये स्पेशल पॉइंट है टू अवॉइड द रेक्टल प्रोलैप्स। इसको लगाते ही हमारा फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार है। दिस एंटायर फॉर्मूला विल वर्क ऑन द chronic hemorrhoid with prolapse of rectum. तो चलिए RY की लोकेशन देख लेते हैं। So first let's see the location of pericardium 6. पहले हम pericardium 6 की लोकेशन देखते हैं। Pericardium 6 is the point only 2 चुनाव that we know. हमारी कलाई से 2 चुन ऊपर होता है pericardium 6, right? This is the pericardium 6. चलिए pericardium 5 की लोकेशन देखते हैं। 5 is 3 चुनाव. From the wrist crease we are going one more tune up, that is a 5. Okay, we can see the tendon here. आप टेंडन देख सकते हैं, एक तरफ तो रेडियल साइड का टेंडन है। Okay, we can see the tendon here. Okay, let's see the location of pericardium 4. चलिए pericardium 4 की लोकेशन देख लेते हैं। ये 5 चुनों पर है। अब देखिए ये this is the 5 चुना pericardium 4. It is a wonderful point because it is the G cleft point of the pericardium. ये हमारी pericardium का मेडिकल इमरजेंसी पॉइंट है, G cleft point है। This is the pericardium 4. So this is the pericardium 4. Wonderful point. कितना ऊपर है? 5 चुन ऊपर। Okay, let's see this. We can see the tendon. हम टेंडन को भी देख सकते हैं। Not located. So this is the 5 chun. And this is the pericardium 4. We have seen pericardium 6 and pericardium 5. Pericardium 4 और 5 के बीच में एक पॉइंट होता है जिसे कहते हैं RY. RY is 4 chun. RY is 4 chun up. ये हमारा 4 चुन ऊपर पाया जाता है, यानी बीच में. Let's see in the other image here. So if you look at this image, आप इसको देखिएगा. So we are having multiple tendons here. Okay. Okay, maybe I will show you other image. Okay, maybe I will show you in my hand. मैं आपको अपने हाथ में. और Y, very effective point in the acupuncture. Let's see the image.
अब आपको समझ में आ जाएगा। Now look at here. You can see the 2 points, which is fortune proximal from the wrist crease. हमारे कलाई से 4 चुन ऊपर है। ये गजब के पॉइंट है प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम को रोकने के लिए। अब ये 2 पॉइंट हम जाने कैसे, कहां पर हैं एग्जैक्ट। चलिए मैं आपको अपने हाथ में, लुक एट माय हैंड। वी कैन सी दिस गैप, यहां पर गैप दिख रहा है। दिस द पेरिकार्डियम। नाउ वी आर गोइंग fortune. So 2 chun and 2 more chun. We are reached here. I am going here. I can feel the tendon, one tendon this side and one tendon this side. I am coming to the tendon toward the thumb side. अब मैंने thumb side वाले tendon को पकड़ लिया। ये thumb side की जो bone होती है इसे radius bone कहते हैं, radius. So this tendon is called flexor carpi radialis, क्योंकि ये फ्लैक्शन करता है। फ्लैक्शन यानी हाथ को मोड़ने में मदद करता है। इसका नाम है ये, whatever the name, 1 point on this side of tendon, 1 point on this side of the tendon. I will take 2 point. एक पॉइंट मैंने टेंडन के इस तरफ लगा दिया, यानी पेरिकार्डियम चैनल पर चला गया, और एक पॉइंट मैंने दूसरी ओर लगा दिया, वो थोड़ा लंग चैनल की तरफ आ गया। So 2 point, 1 point on this side of the tendon. You can see you can feel the tendon. Can you see this tendon? Flexor carpi radialis. कितने लोगों को दिख रहा है? ये रेडियस बोन की तरफ है, जिसे कहते हैं फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। इसी के दोनों तरफ लगा देना है, इसे कहते हैं अरवाई। तो ऐड कर दिया उसमें प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के लिए। So Arvai is the very good point. We are using it for prolapse of rectum and the multiple problem which is connected with the rectum. Okay. I will show you in the other image. Let's see one more image. एक इमेज में और देखिए। अब इस इमेज में देखिए आप, ये जो टेंडन है ना, टेंडन के दोनों बाजू है, इधर भी है उधर भी है। दिस पॉइंट इज लोकेटेड on the both sides of the tendon. The tendon is called flexor carpi radialis. Got it? तो ये लगाते हैं प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में। इट्स ए वंडरफुल पॉइंट। सो द मेन इंडिकेशन ऑफ दिस अरवाई इज हेमरॉइड। अरवाई का प्रयोग कहां करते हैं? अरवाई का प्रयोग केवल प्रोलैप्स में नहीं करते, प्रोलैप्स में तो कर ही सकते हैं, लेकिन पाइल्स में भी कर सकते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द पेरिकार्डियम चैनल इज वेरी गुड फॉर स्टमक। इफ यू आर ट्रीटिंग द पेरिकार्डियम 6, इट इज अरेस्टिंग द एसिडिटी। जैसे ही आप अरवाई को लगाते हो तो ये एनल प्रोलैप्स को कंट्रोल करता है, राइट। इट्स अ वेरी गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ हेमरॉइड, ये सभी प्रकार के हेमरॉइड का। और छाती का तो है ही, आप पेरिकार्डियम 6 लगा दो, पेरिकार्डियम 4 लगा दो, या बीच में अरवाई लगा दो, छाती को तो सब ठीक करने वाले हैं। ये सारे पॉइंट चेस्ट के हैं, दे आर द गुड पॉइंट फॉर द चेस्ट। बट हियर they are the good point for acidity, they are the good point for prolapse of rectum, they are the very good point for the hemorrhoid. ये पाइल्स को ठीक करेंगे, हेमरॉइड को ठीक करेंगे, छाती के दर्द को भी मिटाएंगे, और लोकल पेन को तो मिटाएंगे। अभी हमारा टारगेट है हेम। तो कितने लोग हैं जिनको अरवाई की लोकेशन समझ में आ गई, एग्जैक्टली समझ। चलिए, तो ये हमने और एक समझा फॉर्मूला। आज हमने जो फॉर्मूले की बात की है, सभी प्रकार के 5 पाइल्स पर काम करता है, चाहे मस्कुलाइन हो, फेमिनाइन हो, इंटेस्टाइनल हो, फिशर हो, या ब्रीडिंग पाइल्स हो। ये फॉर्मूला सभी प्रकार के पाइल्स में काम करता है, वेदर द क्रोनिक पाइल्स और द एक्यूट पाइल्स, उन पर भी काम करता है।
I hope you have understood. So now we'll continue the discussion of piles tomorrow. अब हम कल की क्लास में इसका आगे का डिस्कशन करेंगे. Thank you so much. Closing the session. See you tomorrow. Good night.